हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन जिसमें हम लोग छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं आज। और पिछले सेशन में हम लोगों ने कवर किया था स्केलिंग अप एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस तक, राइट। तो आज हम लोग आगे मूव कर रहे हैं एंड होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए। एंड हम लोग बहुत ऑलमोस्ट 70% कवर कर चुके हैं, तो बाकी 30% है वो हम लोग शायद ट्राई करेंगे और एक वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो टोटल आप लोगों का पूरा पेपर 20 का एक रिवीजन सीरीज बन जाएगा और साथ ही साथ में ये वीडियो एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे, देन एक बार इसको पूरा गो थ्रू करेंगे, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, राइट। इसका ओवरव्यू पहले देख लेते हैं ना। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते रहूंगा। Entrepreneurship and sustainability management are closely intertwined. Sustainability in a business involves practice that positively impact the environment, society, ensuring long-term viability without causing harm. Sustainability business aim to create a positive social impact while maintaining economic growth. Now, there is an example of sustainability business practices: sustainable materials, utilizing eco-friendly materials in a productions, supply chain optimization, reducing greenhouse gas emissions through efficient logistics, renewable energy, powering operations with solar, wind, and other renewable sources, community support, investing in local education and development programs. Just आप लोग एक बार रीड करेंगे तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। इसमें एज सच कुछ याद रखने का वाला कुछ चीज है नहीं। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। इसमें क्या बोला जा रहा है? सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेट इकोनॉमिक प्रैक्टिस विद एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, social responsibility. It focus on minimizing environmental impact, reducing wastage, emission, resource conservation and reuse, promoting recycling and efficient use of materials, economic viability, ensuring that business practice support long-term profitability and sustainability, meeting current and future need, balancing immediate business goal with the welfare of future generations. Organizations are increasingly recognize the importance of sustainability, with even small and medium-sized enterprises adopting these practices for competitive advantage. तो ये ध्यान देना। Next, challenges and opportunities for sustainability. Value creation. इंपॉर्टेंट ये थोड़ा है, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे कि क्या क्या चैलेंज है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ऐसे इसको बांटा है। जैसे डेवलपिंग अ न्यू वे टू क्रिएट वैल्यू एंड जनरेट रेवेन्यू, दैट इज अ चैलेंजिंग। एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी? ट्रांजिशनिंग टू सर्विस ओरिएंटेड मॉडल्स व्हिच कैन ऑफर लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है? क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट थ्रू इको फ्रेंडली डिजाइन। अपॉर्चुनिटी क्या है? यूटिलाइजिंग इनोवेटिंग और इनोवेटिव अप्रोचेस लाइक बायोमिमिक्री, क्रेडल टू क्रेडल डिजाइन। नेक्स्ट, कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज में क्या चैलेंज रहेगा? इंस्टिलिंग अ कल्चरल ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद इन एंड अक्रॉस इंडस्ट्री। अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है? लीडिंग द सेक्टर इन सस्टेनेबिलिटी कैन एनहांस रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। कम्युनिकेशंस, चैलेंजेस क्या आने वाला है? इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स टू स्टेक होल्डर्स। अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है? एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट, कंप्लायंस। चैलेंजेस क्या होने वाला है इसके अंदर? मीटिंग वेरियस सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? इन्वेस्टिंग इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट कैन ड्राइव कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी। तो वन बाय वन हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके हम लोगों ने पूरा इसको कवर अप किया है। जैसे नेक्स्ट, मेजरमेंट। मेजरमेंट में चैलेंजेस क्या होगा? डिफाइनिंग एंड मेजरिंग सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स। अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाला है? पार्टनरशिप विद डाइवर्स स्टेक होल्डर्स टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबिलिटी टूल्स। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या होने वाला है चैलेंजेस? क्रिएटिंग एन एक्यूरेट एनवायरमेंटल बैलेंस शीट। अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है? अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स। चैलेंजेस क्या होने वाला है? अलाइनिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन विद सस्टेनेबिलिटी गोल्स। अपॉर्चुनिटी, फॉस्टरिंग अ कल्चरल और कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी थ्रू इंसेंटिव प्रोग्राम्स। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। चैलेंजेस क्या होने वाला है? एनकरेजिंग सप्लायर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म वैल्यू थ्रू अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी इशू ऑफ स्टार्टअप। एक टॉपिक आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? स्टार्टअप प्ले अ क्रूशियल रोल, स्टार्टअप प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस बात है। ऑफन बीइंग मोर एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव to market changes compared to large organizations, they also offer unique opportunities to integrate sustainability from the outset. Now, what are the key issue for startup? ये हम लोगों को देखना जरूरी है।
जैसे कि इंफॉर्मेशन गैप, इशू क्या है? स्टार्टअप ऑफन लैक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, अवेयरनेस इशू क्या है? एंटरप्रेन्योर मे नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। Public funding issue क्या है? There is often insufficient focus on public funding for sustainable startup. Solution क्या है? Enhancing support and incentives for startup that adopt sustainable business models. तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर अप किया है, जो कि आई थिंक बहुत ईजी है। आप लोग एक बार मेरे साथ अगर फिर से एक बार रीड करेंगे या फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ फंड हाउसेस। ओवरव्यू पहले एक बार ले लेते हैं हम लोग इसका। Now, exit strategy are critical for fund houses and investors as they are provide a structural plan for withdrawing investments, ensuring a return, and managing risk. This section delves into various exit strategies, their implication, and their importance for fund houses. अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड पूछते भी हैं, ठीक है? तो अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से आप लोग सुन लेंगे। एग्जिट स्ट्रेटेजी आर क्रिटिकल, ये हम लोगों ने यहाँ तक किया है। दैट्स दिस सेक्शन delves into various exit strategies and their implications and their importance for fund houses. Now, exit strategies. Exit strategies are plans that enable business owners, investors, venture capitalists to liquidate their position in financial asset or business under predefined conditions. They are vital for securing returns and managing their life cycle of investment. Key purpose क्या है इसका? Closing non-profitable ventures, shutting down business that are not yielding expected profits, capitalizing on profitable opportunities existing when profit objectives are achieved. Market changes exiting due to the significant changes in market conditions. Selling or reducing ownership, selling the business or reducing one's stake into focus on other opportunities or limit losses. नाउ कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग सैलरीज एंड बोनसेस। जैसे कि फॉर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स दिस मेथड अलाउ फॉर ग्रेजुअल विथड्रॉल और प्रॉफिट while still meeting their business obligations. Selling shares to partners allow for a controlled exit while providing liquidity. Liquidation is also there, we know all that. Selling asset at a market value to pay off obligation, retain the remainders. Initial public offering IPOs, listing the company on the stock market to sell share to the public. Merger and acquisitions, merging with the being acquired by another company. Outright sale, selling the business entirely to another party. Passing to family members, transferring business ownership within the family. Next, understanding the exit strategy. An exit strategy is integral to investment planning and risk management, helping entrepreneurs and investors mitigate risk and capitalize on opportunities. A well-defined exit strategy is crucial for business continuity, especially in times of crisis and significant change. Key component क्या रहने वाला है? Risk management, planning for both positive and negative contingencies, profit realization, liquidating stake in successful ventures to realize profits, loss mitigation, minimizing loss by exiting underperforming investment, and for trader and investors, setting predefined exit point help eliminate emotional decision making and ensure a disciplined approach to investment. So these are the component. नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है दैट इज एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के भी कुछ कुछ कॉमन एग्जिट स्ट्रेटेजी है जो सिमिलर सेम ही है, तो हम लोग एक बार बस रीड करेंगे तो हम लोगों का ये समझ में आ जाएगा। एज सच कुछ टफ नहीं है, इसमें फिर से वही रिपीटेशन होने वाला है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो हम लोग पहले सीखे, सेलिंग शेयर टू द पब्लिक, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल रिटर्न्स, mergers, combining with another company to enhance resources, market position, acquisition, selling the startup to another company or investor, offer leading to complete exit for the founders, liquidation, gradually winding down the business and selling asset to the repay debts, allowing the owner to exit without ongoing obligation, private offering, raising fund through private share, sales to selected investors, offering flexibility, cash cow strategy, operating in a steady market with high returns, providing a continuous income without the need for an exit,
Regulation A plus, a simplified version of an IPO, allowing smaller companies to raise capital without the stringent requirement of a full IPO. Venture capital, securing substantial investment from venture capitalists who expect significant returns, usually through future exit like IPOs or acquisitions. Third party sale, selling the business on the open market, potentially yielding a lucrative exit, but often requiring extensive time and negotiation. Friendly buyout, selling the business to a family member or close associate, which can maintain a business continuity but may involve complex negotiation. Management buyout, transferring ownership to existing management, which can ensure smooth transition and continuity but may require significant financial arrangement. तो आप लोग अगर एक एक करके वन बाय वन इसको पढ़ेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसका क्रक्स जो है वो लिख के आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आएगा ये चीजें। इंपॉर्टेंस फॉर एन एग्जिट प्लान क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस फॉर एन exit plan. Having a well-defined exit plan is crucial. Even if immediate selling is not intended, an exit plan ensures a preparedness for various scenarios from personal emergencies to market downturns and helps guide strategic business decisions. Key reasons for having an exit plan क्या हो जाएगा? Personal health or family issue. Ensure business continuity in case of the owner cannot manage the company due to personal crisis. Economic crisis. Provide a strategy to avoid or minimize the impact of economic downturns. Unexpected offers may enable informed decision making when acquisition offer arise unexpectedly, and strategic goals help in setting clear business goals and guiding long term business decisions. तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी खत्म किए। जो छोटा छोटा टॉपिक है आराम से आप लोग सुनते जाइए, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। और मेरे साथ साथ एक बार खुद घर में जाके पढ़ लेंगे तो आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, गैदरिंग क्रिटिकल मास थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान से सुनेंगे तो आप होप कि समझ में आ जाएगा। अदरवाइज एज सच कुछ ट्रिकीनेस तो इसमें है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल मास, पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। क्रिटिकल मास इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट अ पिवोटल milestone where a company becomes self-sustaining and no longer require an external funding. Achieving critical mass signifies that the business can cover its operational expenses, repay early investors, and generate enough profit to finance its own growth and operations independently. This concept is fundamental because it marks the transition from survival mode to a thriving and stable enterprise capable of withstanding market fluctuations and scaling efficiently. तो क्रिटिकल मास का आप लोग अगर समझना है तो पहले बस इतना सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दैट इज अ बिजनेस कंड इज अ पिवोटल माइलस्टोन वेयर अ कंपनी बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग एंड नो लॉन्गर रिक्वायर एक्सटर्नल फंडिंग। एक्सटर्नल फंडिंग का हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है इस क्रिटिकल मास का? Signals for financial stability. The business financially robust enough to cover its cost and generate profit without needing external investment. Enable sustainable growth. This company can invest, or the company can invest in future growth opportunities such as new product line or market expansion. Attract future or further investment. Achieving critical mass demonstrate a successful business model, making the company more attractive to potential investor and acquire. Next, critical mass through merger and acquisition. Merger and acquisition are powerful strategies for companies to quickly achieve critical mass by combining resources, expanding a market reach, optimizing operational efficiency. Merger and acquisition can help a company grow rapidly and establish a dominant position in the market by leveraging the combined strength of two or more organizations. Obvious बात है, important है, just highlight कीजिए मेरे साथ ये वाला point कि that leveraging by combined strength by two or more organizations. Next, benefit of merger and acquisition में क्या आएगा? These are the important from exam point of view, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। बेनिफिट क्या क्या आएगा मर्जर एक्विजिशन के अंदर? जैसे एक्सेस टू न्यू मार्केट. Merger acquisition provide an access to new geographical market to customer segment, enhancing the client accessibility, increasing revenue opportunities. Enhance competitive position. Acquiring or merging with another company to can significantly improve a company's market position, shifting it from a subordinate role to a dominant role.
Service expansion. Companies can expand their service offerings or product lines, achieving a competitive edge or critical mass in high demand areas. Barrier reinforcement. Merger and acquisitions can create a strengthened barrier to entry, making it difficult for competitors to enter the market. Operational efficiency. The combined entity can achieve greater operational efficiencies, reducing cost and improving service delivery. Increased capacity. Merger and acquisition can provide additional operational capacity without the need for new capital expenditure. Improve financial position. Merging with or acquiring another company can enhance credit ratings and financial stability, leading to better access to capital and reduce capital cost. नेक्स्ट मार्जिन एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है, 7 स्टेप मेथोडोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ध्यान से आप लोग एक बार मेरे साथ सुनेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा. Executing a successful merger and acquisition involve a structured step by step approach. पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट एंड सर्विस को. जैसे इवेल्युएट मार्केट और सर्विस लाइन विद सब्सटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल. एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक्स एक्विजिशन ऑफ बैंक ऑफ राजस्थान एक्सपैंड इट्स ब्रांच नेटवर्क सिग्निफिकेंटली, enhancing its market presence. Identify merger and acquisitions candidates. Compile a list of potential companies that align with the strategic financial goal. Focus on those that can help achieve desired market or service line growth. Evaluate financial position and fit. Assess the financial health of potential target. Consider potential benefit, risk, and how each target compare to other. Make a go and go decision. Weigh the pros and cons of the proceeding with the acquisition of merger. Ensure alignment with strategic goal and financial stability. Next, perform a valuation. Determine the target company's values through various valuation methods such as discontinued cash flow or comparable company analysis. Select the optimal transaction structure. Conduct due diligence and negotiate contract. Perform through due diligence to uncover the potential risk and opportunities. Negotiate and finalize the transactions agreement. Execute and monitor the transaction. Integrate the companies quickly to maximize value. Address any operational, human resources and legal challenges to ensure a smooth transition. तो इसी के साथ हम लोग 7 स्टेप को कवर किए, जिसमें पहले था हम लोगों का क्या, पहले था आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ग्रोथ, उसके बाद आइडेंटिफाई मर्जर एंड एक्विजिशन कैंडिडेट्स, उसके बाद इवेल्युएट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फिट, उसके बाद मेक गो एंड गो डिसीजन, गो और नो गो डिसीजन, राइट, गो एंड नो गो डिसीजन, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, परफॉर्म एवेल्युएशन, conduct due diligence and negotiate contract, and next is execute and monitor the transaction. Next, startup and M&A, a case study from India. एक छोटा छोटा केस स्टडी कुछ कुछ मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आप लोगों को समझ में आए. द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सपीरियंस एंड सिग्निफिकेंट सर्ज इन मर्जर एक्विजिशन इन 2022 driven by various factors. Economic shift, the global economic downturn and reduced investor funding pushed startup towards consolidation and acquisition. Market trend, sectors like enterprise tech, e-commerce, edtech, fintech show the highest activity in M&A, reflecting their growth potential and strategic importance. Next, key M&A example in 2022, ShareChat and Moj. Like the merger of these two platforms create a combined entity with a massive user base and significant market influence. Zomato and Blinkit. The acquisition allowed Zomato to expand its quick commerce capabilities, strengthening its market position. Lenskart and Owndays. Lenskart acquisition expanded its international footprint, product offerings, and enhancing its market reach. तो ये सब हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है जिस शेयर चैट मोज का जो मर्जर हुआ था, जोमेटो ब्लिंकिट का जो मर्जर हुआ था, लेंसकट एंड ओनडेज का जो मर्जर एक्विजिशन हुआ था, वही बात यहाँ पे डिस्कस किया गया है. चैलेंजेस क्या इसके अंदर आएगा, while M&A can provide a numerous benefit, it also come with the certain challenges. क्या क्या है, जैसे cultural integration, merging different approach, cultural, corporate cultural can be a challenging and require careful management. Regulatory hurdles क्या रहने वाला है इसके अंदर, legal and regulatory approval can complicate the process and require thorough compliance and strategic planning, right? तो कल्चरल इंटीग्रेशन होने वाला है, रेगुलेटरी हर्डल्स के अंदर भी ये कवर अप हो जा रहा है. स्टेक होल्डर सपोर्ट भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंश्योरिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स इज क्रिटिकल फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, राइट. तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक भी खत्म किए, जहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट भी किया है कौन सा इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ना होगा सो दैट आप लोग आराम से इसको कंप्लीट कर सके, राइट. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जिसमें इसमें हम लोग बस रीड करने वाला है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. टॉपिक है तो इसलिए मैंने भी इसको समराइज वे में डाला है, ठीक है.
आ जाइए एक बार फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। नेगोशिएटिंग इन ईच माइलस्टोन इन बिजनेस डील। Overview of business negotiation. Contrary to the common belief that negotiation are isolated high-stake meeting, they should be seen as a continuous series of agreement with multiple critical milestones. Business negotiation involve multiple parties with varying goals, perspective coming together to find a common ground, resolve conflicts, and exchange value. This process is crucial for long-term business relationship, which often involve numerous negotiations over time, each linked to significant agreement and milestone. की माइलस्टोन क्या आने वाला है इसके अंदर बिजनेस नेगोशिएशन के नेगोशिएशन इन बिजनेस टिपिकली फॉलो अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द डील. These milestone helps ensure that both the parties maintain a clear understanding of the progress and stay aligned towards reaching a mutually beneficial agreement. Initial agenda क्या होने वाला है पर्पस टू आउटलाइन द मेन टॉपिक एंड इशू टू बी डिस्कस्ड आउटकम एंड इनफॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट LOI which is non-binding agreement indicating a commitment to negotiating further or outline points. Drafting the term sheet and memorandum of understanding. Purpose to formally document the key terms and commitment agreed upon the initial discussion. Outcome a draft term sheet or MOU that serve a foundation for detailed negotiation and final agreement, right? Developing a detailed term sheet. इसका पर्पस क्या है to refine the initial draft into a comprehensive document outlining the terms of the agreement outcome, a detailed term sheet or MOU signed by both the parties, which guide the subsequent negotiation process. Final agreement, negotiation and closing. इसमें क्या बोला जा रहा है पर्पस to finalize the agreement including all necessary legal and financial details. Outcome, the closing of the deal, which may include post closing milestone to ensure the agreement's terms are met. Negotiation strategy for business deal. Effective negotiation require a strategic approach, especially when dealing with complex business agreement. The following strategies can help overcome common roadblocks and facilitate successful deal closures. Right? जिसमें कुछ कुछ हम लोगों ने नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस किया. आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखेंगे इस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज को. राइट? जैसे पहले हम लोग बात करेंगे नेगोशिएट द प्रोसेस. एक्शन क्या है? एस्टेब्लिश अ क्लियर प्रोसेस of the beginning of negotiation including ground rules and the issue to be discussed. इसका benefit this help prevent misunderstanding, streamline the negotiation process, set benchmarks and deadlines. Action, define short-term goals and ambitious final deadline for the negotiation process. Benefit, deadline can motivate both the parties to make concessions and think creatively to reach an agreement. Employ a shutdown move. Action, request a period of exclusive negotiation to prevent the other party from considering offer from competitors. Benefit, this can help secure the deal by focusing the negotiation on the value of you offer. So set a benchmark and deadlines, employ a shutdown move, take a break. Action, adjourn the negotiation temporarily to allow for reflection and regrouping. Benefit क्या है? A break can reduce the tension, provide a clarity of the negotiation progress, bring इन अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. एक्शन क्या होगा इसका? देखिए ये जो मेरा टॉपिक है ना इसमें हम लोगों ने वैसे ही किया एक्शन बेनिफिट एक्शन बेनिफिट एक्शन बेनिफिट. तो जो जो स्टेप है जैसे नेगोशिएट द प्रोसेस, सेट द बेंचमार्क एट डेडलाइन, एम्प्लॉय अ शटडाउन मूव, टेक अ ब्रेक, ब्रिंग इन ट्रस्टेड एंड थर्ड पार्टी, चेंज द नेगोशिएशन टीम, सेट अप अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सबका हम लोगों ने यही फॉलो किया है. यहाँ पे हम लोगों ने वैसा करके नोट बनाया है कि इसका एक्शन क्या है. यूज अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू हेल्प आइडेंटिफाई अ पॉसिबल जोन एग्रीमेंट. बेनिफिट क्या है? दिस कैन हेल्प ओवरकम impasses and identify area where compromise is possible. Change the negotiation team. Action क्या है? Introduce a new team member to bring fresh perspective and resolve personality clashes. Benefit क्या है? New team member may offer innovative solution and help move negotiation forward. Set up a contingent contract. Action क्या है? Propose a contract that includes contingency based on the future outcomes. Benefit क्या है? This allow both the parties to agree on the term while accounting for differing views on potential risk or future conditions. Next, real world application of negotiation milestone. तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है उसको समझा. अब जैसे कुछ कुछ और टॉपिक है जो हम लोग एक बार रीड करेंगे. ये टॉपिक उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है. आप लोग जो मैं हाईलाइट किया हूं बस उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, दैट इज एनफ.
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? Example of a business negotiation milestone. Consider a tech startup negotiating a merger with a larger firm. The negotiation might include agenda discussion, identify key area of integration such as technology market expansion, draft team term sheet, outline the term for merging technology platform on market access, detailed term sheet, define specific roles, responsibilities, timeliness for integration, final agreement and closing, finalize the merger, including post-merger support and performance milestone, challenges and tips for successful negotiation. क्या क्या challenges and tips है? For example, be prepared for surprise. Be ready to handle unexpected development that could impact the negotiation. Maintain flexibility. Adapt to changing circumstances and be willing to explore alternative solution. Focus on long-term relationship. Aim for outcome that strengthen long-term business relationship rather than short-term gains. Be transparent and build trust. Open communication and trust are crucial for successful negotiation. तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर अप किया है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया, नेगोशिएट द प्रोसेस, इसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। एंड बाकी जो है उतना रेलेवेंट नहीं है, एक बार आप लोग रीड करेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बस रीड ही किया है। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, जैसे कि गैदरिंग द क्रिटिकल मास थ्रू द मार्जिन एक्विजिशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग इसी सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आने वाले सेशन में हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे वन बाय वन, ठीक है। एंड होपफुली हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो जो टॉपिक है छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे देखिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर छोटा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइज रिस्क इस एक टॉपिक है, ये भी एक छोटा टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ द कोसो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी बहुत ज्यादा। प्रेडिक्टिंग, कैलकुलेटिंग, ओवरकमिंग फाइनेंशियल रिस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आराम से समझेंगे। उसके बाद आप लोग अगर देखेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी एक छोटा टॉपिक है, उतना रेलेवेंट नहीं है बट हम लोग एक बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन रिस्क मॉनिटरिंग एंड मार्केट मेकिंग एडजस्टमेंट है, रिस्क मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, आराम से हम लोग समझेंगे चीजों को, ठीक है। इंक्रीजिंग कैपिंग मैकेनिज्म एंड रिस्क मिटिगेशंस, तो आने वाला जो टॉपिक होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट छोटा भी है और समझने में भी इजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब टॉपिक हम लोगों ने कहीं ना कहीं एसएफएम में पढ़ा है, ठीक है। और हम लोगों का अगर आप लोग ये भी देखेंगे शायद कोसो फ्रेमवर्क वगैरह हम लोगों का एसपीएम बीबी में भी है जितना मुझे याद है। तो अगर किसी ने पेपर 20 पढ़ा है तो वो और भी ज्यादा रिलेट कर पाएगा। ऑल्दो जो पेपर 20 पढ़ रहा है वो तो इस वीडियो को नहीं देखने वाला है, क्योंकि ये तो इलेक्टिव पेपर है, पेपर 20 सी के अंदर आ रहा है। बट फिर भी ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो टॉपिक से बहुत ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आराम से इसको कंप्लीट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर अप कर चुके हैं और छोटा छोटा कुछ कुछ टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा पेपर 20 सी, दैट इज ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और अच्छा अगर लग रहा है तो डू कमेंट इन माई चैनल कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर कुछ सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि वन बाय वन मैं उसको भी वैसे करके अपलोड करूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सच पेशेंस। एंड मेरा आगे तक अगर जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो अगर पसंद आया है तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे कमेंट में इन्फॉर्म करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा एफर्ट जो जा रहा है मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस, थैंक यू सो मच। और आने वाले टॉपिक में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करने वाले हैं, जो ये टॉपिक है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।